everyone, welcome back to MK tutorial. So this is the part 2 of the previous video where we are going to explore the BLAST database by clicking on this website. You can either click on this website or you can search for NCBI in Google and you can directly click on BLAST. So this is the BLAST database which is in the NCBI tool. So you can directly click on the website and come here, or you can just click on here. You can go on NCBI. You can click on here this and website पर जाकर you can click on blast. Same home page appears. If either you can search directly or either you can search it like this. ओके यहाँ पे ये जो है नीचे टाइप्स दिए हुए न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट ब्लास्ट एक्स टी ब्लास्ट एंड प्रोटीन ब्लास्ट जो कि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था फॉर एन एग्जांपल जस्ट आई विल शो यू हाउ टू यूज दिस और हाउ टू यूज द ब्लास्ट. तो हम क्लिक करते हैं न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पर. ओके अब जैसे ब्लास्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे टाइप्स आ गए ब्लास्ट एन ब्लास्ट पी ब्लास्ट एक्स ब्लास्ट एन टी ब्लास्ट एक्स राइट. यहाँ पर हमने अपना क्वेरी सीक्वेंस को ऐड करना है. यहाँ पर जो मैं सिर्फ एक्सेशन नंबर भी ऐड कर सकती हूँ या मैं फास्टर सीक्वेंस भी ऐड कर सकती हूँ. सो आई विल शो यू हाउ टू रन दिस ब्लास्ट. सो फर्स्टली you have to enter the accession number or faster sequence here. So I have already downloaded a faster sequence and now I'm going to copy paste it here. You can do this copy pasting from the NCBI blast. मैंने इसके पहले जो वीडियोस पोस्ट किए हैं मैंने बताया है कि हमने कैसे कॉपी पेस्ट करना है. सो जस्ट पेस्ट योर फास्टर सीक्वेंस हियर. यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कि मैं ये डेमो है ना तो डेमो blast. So this will be my job title. Okay. Now as you can see here you can select databases. यहाँ पर मैं just demo run कर रही हूँ तो मैं select करूँगी I'll select this nucleotide collection. Now you can add the name of the organism or you can not. It is optional. Do this. उसके बाद you have to simply run blast. तो एज यू कैन सी हियर तो हमारे जो क्वेरी सीक्वेंस के हिसाब से दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेरी सर्च. सो एज यू कैन सी द जॉब टाइटल इज द डेमो ब्लास्ट एंड दिस इज द ब्लास्ट सर्च रिक्वेस्ट आईडी. नाउ दिस सर्च एक्सपायर्स ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर. यू कैन डाउनलोड इट इन दिस फॉर्मेट्स. So the program name जिसमें हमने run किया that was blast n. Now this is the citation of this particular blast run. Which database that we have used or which it is comparing with is core NT. Query ID यहाँ पे दिया हुआ है. This is the description of the strain or this is the description of the query sequence. The molecule type that is DNA. Query length is 82,880. अदर रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे. यू कैन सी द डिस्टेंस ट्री और यू कैन सी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इन NCBI alignment viewer. Now you can see here there are 4 different columns the sequences. So first column is description. Now in this description the query sequence and aligned sequence is matched. So how to understand this? So the result that appears here will match with your query sequence. तो यहाँ पर the scientific name of the organism is given from which the query sequence is matching. maximum score कितना match हो रहा है वो हमारे सीक्वेंस के साथ. एंड दिस इज द क्वेरी कवर दैट हाउ मच परसेंटेज इट इज मैचिंग विथ. देन ये एक्सेशन नंबर है. सो एक्सेशन नंबर में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि इसको किसने ये सर्च को किसने अपलोड किया है, किसने साइट किया है, कब साइट किया है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा. सो हियर देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल इफ यू कैन सी. स्क्रॉल डाउन.
सो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब ग्राफिक समरी में क्या दिया हुआ होता है, इफ यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर रेड लाइंस एंड यू कैन सी द ब्लू लाइन. सो ये जो ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन इज द लेंथ ऑफ द क्वेरी सीक्वेंस which we have given in a faster sequence. And जो रेड लाइन है, it represents that how much query sequence is matching with other examples. Okay. Third column is alignment, where my query sequences matching with the sequences in the database. So see, first is it is matching with this database is predicting that it is matching with Drosophila, wireless transcription factor pangolin, and ये उसका output है. Okay. So as you scroll it up, this is the second or next match. Then scroll, this is the third, एंड और भी बहुत सारे मैचेस होते हैं, तो यू कैन सी इट हियर. एंड फोर्थ is taxonomy. So here in the taxonomy, it shows the taxonomy of my query sequence and its matching query. See, you can see the name of the organism, you can see the blast name here, you can just click on any one of it, how much score it is matching with, how much number of hits it is giving, and यहाँ पर उसका पूरा description दिया हुआ है. So that's it, how to run the blast. If you have understood the video, just like it, share it, and if you're new to just click on the bell icon, so whenever I post a new video you will be notified about it. Okay, bye.